हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उस पर भी है, लेकिन अगर हम प्रॉपर न्यूज़ लेटर जो है इस हवाले से साल बाद जो है न्यूज़ लेटर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने न्यूज़ लेटर्स करते हैं, तो हमारा PPF जो है वो एक सॉलिड हो जाएगा कि हमारी जितनी भी 12 महीने की एक्टिविटी है, एक्टिव सेशन तो होता है, ठीक है। अब इसमें हमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको अगर हर क्वार्टरली या हाफ ईयरली एक दफ़ा उनको बुलाया जाए और उनके साथ मीटिंग की जाए, तो जैसे फैसलाबाद में मुख्य बाजारों के सरबराहान बैठे हुए हैं उनको एंगेज किया जाए, और उससे ये होगा कि एक तो ये है कि इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं इस हवाले से, क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग भी होते हैं और ज़माना तो समझे में ज़माना शनास भी होते हैं, तो हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो उसको एक रीच मिल जाएगी, एक रीजनल लेवल से लेकर नेशनल लेवल पे भी हम उसको कर सकते हैं। और हमारा एक इंफॉर्मेशन सेक्टर होना चाहिए, तो जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं उनको न्यूज़पेपर तक लेकर हमारी प्रेस रिलीज हो, और ये मजीद इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, प्लेटफॉर्म जो है उसके एम्बिट्स होते हैं, उसका मैंडेट है, लेकिन अगर इस मैंडेट को सोच लिया जाए, इस हवाले से भी इसको डायमेंशन दी जाए, तो दैट्स माय सजेशन। मेरा नाम है, मैं करीम साहब के साथ हैं, तो सोशल मीडिया पे देखी थी आपकी पोस्ट वगैरह। करीम साहब के साथ थोड़े दिन पहले एक वो हमारा 100 ईयर का एक था, उधर सेशन बड़ा अच्छा, उधर उनसे मुलाकात हुई थी, तो मैंने वो पिक्चर देखी थी, तो मैंने कहा माशाल्लाह ये हैं तो और भी बड़े चेहरे आए होंगे। तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो मार्केटिंग से है, सोशल मीडिया और जो है ई कॉमर्स, और मैं 2009 से जो है ना इस फील्ड में, और इस कोई 15 साल के एक्सपीरियंस में अगर मैं मेंशन करूँ कि इस ग्रुप की जैसे आप बात कर रहे हैं, फैसलाबाद से रिलेटेड अगर कोई बात करें, तो मैंने 3 ऐसे बड़े इंटरनेट के जो प्लेयर्स हैं एक तरह के ट्रेनिंग के हवाले से, वो मे भी समटाइम कई लोग जो है ना उनको एज ए ये समझते हैं आए कोर्स में थी और चले गए, लेकिन मेरा उनके साथ एज ए मार्केटिंग का बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा है। पहले तो थे हमारे इस्लामाबाद के करीम साहब, उनको जानते हैं, यूसुफ सही साहब, उनका एक था IBD के नाम से 2012-13, ठीक है। उसके अलावा जो है ना एक्सट्रीम कॉमर्स के साथ और एवरेज के साथ मैं बैकएंड पे मार्केटिंग जो है डेफिनेट नूर अहमद साहब। सर आप मोहम्मद अशरफ मेरा नाम है। लास्ट 20 इयर्स अभी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ, और कुछ हमारा यूएई की बेस्ड ऑडिट फर्म है, उसकी टीम है। कुछ सजेशन देना चाहिए इस हवाले से ये है कि इस तरह के जो सेशन है तो थोड़ा सा मेरा ख्याल हमारे मेंबर्स थोड़े लिमिटेड आ रहे हैं इसमें, इस हवाले से आई थिंक थोड़ा सा इसमें तो एडवर्टाइजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन में कोई इसका थोड़ा सा हो, ताकि लोग मेंबर्स के करीब हों, और जो इसका जो पर्पज़ है वो जो इतनी इन्वेस्टमेंट और सारे मतलब माइंड आ रहे हैं, तो इसका थोड़ा मतलब लोगों को मार्केट में फैलाना क्रिएट किया जाए, अवेयरनेस जो है वो अवेयरनेस क्रिएट की जाए। तो आपका ये फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं सर? मैंने ये पहले दिन किए हैं, अच्छा पहले एक्चुअली वो कुछ मसूले की वजह से सही। मेरा नाम आसिफ मट्टू है और मैं एक कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसमें एज ए स्पोर्ट एंड इंपोर्ट में काम करता हूँ ऑलमोस्ट 15 इयर्स। साथ में मैंने अपना भी शुरू किया हुआ है शासक ट्रेड एंड ट्रैवल्स के नाम से। तो मुझे मेरा ये पहला साल है ग्रुप के साथ, तो बड़ा अच्छा है कि बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, लर्निंग को बहुत कुछ मिलता है, सुनने वाला हो कोई। मैं सजेशन ये देना चाहता हूँ कि जो नए लोग हैं, जो बिजनेस में नए हैं, प्रोडक्टिविटी मतलब प्रोड्यूस करना, तो जो प्रोड्यूसर है उन लोगों को और नए जो बिजनेसमैन उनका इंटरेक्शन होना चाहिए। मतलब हमारा एक मंथली मीटअप है, तो एक बीच में या कहीं भी सेटअप हो जाए, ताकि जो प्रोड्यूसर है उनको नए लोगों यूथ के साथ भी इंटरेक्शन करवाया जाए, ताकि वो आपस में तबादला कर सके कि आप क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, व्हाट आई नीड।
तो वो आपस में भी इंटरेक्शन करके एक दूसरे से हेल्प ले सकते हैं, ताकि जो नई यूथ है जो बिजनेस करना चाहती है, ई कॉमर्स करना चाहती है, उनके रास्ते खुले। हम लोग कुछ बहुत सारे हैं तो कुछ इस फील्ड में बहुत वीक भी हैं, तो जो खासतौर पर यूथ है उनका इतना एक्सपोजर नहीं है, तो उनके लिए जो प्रोड्यूसर है फैसलाबाद में कम से कम उनसे मिलाप हो जाएगा तो उनको चीज़ें आसान हो जाएंगी और वो सोशल मीडिया में अपना अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं और वो काम कर सकते हैं। इसलिए आज जो यूथ की कंट्रीब्यूशन जो प्रेजेंस है वो ज़्यादा है, हम चाहते हैं कि जल्दी से उन तक पहुँचें और आपसे होते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज तारिक बशीर। मैं अहमद रियान प्राइवेट लिमिटेड का सीईओ। मेरा काम इंडस्ट्री के साथ है। मैं इंडस्ट्री के साथ सेल एंड परचेज का काम करता हूँ, धागे का, जिसके अंदर स्पेंडिक्स है जो इम्पोर्टेड धागा है और सिस्टर जारी रखिए। और इसके अलावा मेरे 2-3 प्राइवेट स्कूल है जिनको मैं देख रहा हूँ, और इससे पहले मैं मुख्तलिफ कॉलेज के अंदर जो है वो कंप्यूटर का सब्जेक्ट पढ़ा रहा था। तो इस सेशन के हवाले से बस यही कहूँगा कि इस तरह के बाकी सारे शहरों के अंदर मीटअप्स होते हैं जिनका नेटवर्किंग और एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा ताउन होता है। तो फैसलाबाद के अंदर भी ये जो मीटअप हुआ है ये होना चाहिए, और इसका मेन जो है हमारे बच्चों के लिए भी जो है वो आखिर पे या शुरू पे या दरमियान में 10 से 15 मिनट ऐसी बातें या ऐसी चीजें होना चाहिए कि जो हम अपने बच्चों के लिए भी यहाँ से लेके जा सकें और अपने बच्चों को जो है वो चीजें सिखा सकें। तो स्पीकर आगे All right. आप वो पिक्चर ले आपका कोई तो आपके साथ लगाना प्रेजेंटेशन वगैरह? नहीं, प्रेजेंटेशन नहीं है, इट्स मोर ऑफ अ टॉक। So we don't need a background or anything. no. no, ये वाला लगा। इधर तो मैंने इसे बस ठीक है, that's it. Wow. So added pressure on me. All right. Assalamu alaikum everyone. Welcome to the 62nd meetup of Productivity People Faisalabad. We're really happy to have Mr. Umer Ghumman here from Lahore. He's the country head of Samsung in Pakistan and Afghanistan. And I think it's going to be a really good talk. We have a lot to learn from him. There's a lot that he can show us about next generation AI. And we're all really excited and very happy to have you here. बाकी I think उनसे सुनेंगे कि उनकी insights क्या हैं इस हवाले से, and then we also have like a short question and answer session. Absolutely. So the floor is over to you. Right. Before that, you also need to apologize. You were speaker Right. Last month I was supposed to speak, but मैं कराची में flooding वगैरह हो गई थी, I was stuck there. मैं उसके 1-2 दिन बाद निकल पाया था, तो मैं बोला इस बार फिर आना बनता है और माजरत भी बनती है तो इस सब के लिए. But thank you so much. आप लोग सारे आए हैं, and over to you. The floor is yours. And also, उमर आपने जो AI खासतौर पे AI एजेंटिक AI पे उस पे आपने बात करनी है, and that's really in the far future. तो हम अपने 2 बच्चे भी लेके आए जिनका आज पहला दिन था रूट्स में बैचलर्स प्रोग्राम इन AI, which is a German university program. तो यहाँ पे पढ़ेंगे, तो वो भी आए. हसन यहाँ पे है और ईमन मुझे कहीं नजर नहीं आई, बट शी इज राइट इन द मोमेंट. तो हम पूरा क्रू जो है ना आपको सुनने के लिए. All right. Assalamu alaikum everyone. Hope everyone is fine. My name is Umer Ghumman. I'm in the industry for the last 3 decades. Been in commercial roles, been in marketing, and I've seen this industry evolving from. So I've got like 3 sections of my overall career: the advertising circuit, then I was in the packaging company,
Tetra Pak for 17 years, in which I had different roles, starting off from communications, then pure marketing, then business development, and had some international assignments. Came back to Pakistan, business development, and then eventually thought I should reinvent myself. I went back to university, went to LUMS, did my executive MBA program while I was working over there. And I saw a process of evolution in myself, as well as the technology around us. And fast forward, I got a job at Samsung. This is my 9th year. I'm working as a senior director, country head for Samsung Mobiles. And technology is something which I sell, but I have to accept one thing, that all the organizations, all the people, everyone is falling. We are way behind where they should have been. So if anyone like myself comes from the industry and says that, you know, I'm the expert of something, I'm probably not giving you the right statement, because I have been talking about AI for the last 1 year or so, and every 2 months I have to change the presentation. So this time when I was researching for the agentic AI, because I'm doing a lot of courses, and then I realized that it would be really unfair to put this in the presentation form. I could have just pulled out a few slides and talked about this. So I thought, let's talk about it, and let's talk about my vision of how the agentic AI is going to transform the world, and what I used to think when I was a child, and what I have been through my 30 years of career, and then where is it taking us from here onwards. But a little bit about myself. I have a very long connection. We go back about 2.5 decades, almost 2.5 decades. May 2000, when I joined Tetra Pak, and June, we have a communications training where Wali Sahib was our, I would say, not the instructor, but, you know, a moderator, a consultant, and a guide. And he eventually became a guide for life. So I learned a lot from him. And once I met him in Karachi a couple of years back at his place, and wo jo aapka CU ke samne ke ghar, and he said to me, Umer, you know, you're really underselling yourself. Go for a bigger platform. So, but somehow I could not find a bigger platform in Karachi, but I found a bigger platform for myself in Lahore, Samsung, and then moved up. So thank you so much, sir, for pushing me, pushing my limits, that I was literally undervaluing myself when I was working in a role very comfortably somewhere. So I just want to be uncomfortable. I'm more uncomfortable. I'm more comfortable in being uncomfortable. That's why I try to pitch new ideas, to learn more and share. On the personal side, I am married, and I've got one wife. She's sitting over here. And I have 2 kids. Both kids are from the same wife. So I'm very focused at the same time. And she's generally with me because the kids have grown up. Our daughter is studying at LUMS, and son is doing his engineering from GIK. So the nest is almost empty. So what we make sure that we travel together. Sometimes when I go outside the country, if she has time, then she goes with me. And Islamabad and now Faisalabad, I said, come over. So she just particularly came here to join us for dinner. After that, we're going for some dinner. So that's why I'm little more dressed up. So from the Faisalabad perspective. Now let's talk about when I was a child, many years back. So 82, I was in grade 2, and I used to dream about, after watching the movie Aladdin Ka Satwaं Safar, or Sindbad Ka Satwaं Safar, in which we see Aladdin ka Chirag. And I used to always think कि काश कोई ऐसा हो, कोई ऐसी चीज़ हो कि मैं सोचूं और चीज़ें हो जाएं, कोई चीज़ मेरी मदद करे और मैं सोचूं तो होमवर्क हो जाए, और जो लड़के मुझे मारते हैं मैं इशारा करूं तो कोई चीज़ आके उनको कुट लगा दे और मैं बच जाऊं, और जो मेरा कज़न और मेरा बड़ा भाई जो मुझे बुली करता था, इनको भी कोई सही कर दे. And whatever I want to have,
I wanted to have that in my life back then. So it was a world where the technology had not evolved to the magical level, but at the same time, we did not have the access to the tools, and everything was pretty manual. So we had no computers, we did not have any mobile phones, we did not have anything which could help us pace up the things. So as the things went by, things started to improve, and I saw my first computer experience. I had my first computer experience when I was doing my first MBA in 1995, when I got, so we realized what it is, and then we started getting into internet connections and started chatting. And chatting with the opposite gender was one of the biggest attraction back in the days. The photographs would come and go back and forth, and that's how the technology, we started getting acquainted with the technology. So time passed, smartphones started to seep in, and then we had this, during the MBA program, we found out that there is a technology that you actually write an assignment, and अगर आपने छापा लगाना है तो आप उसको plagiarism पकड़ा नहीं जाता था, जो LUMS के MBA में पकड़ा जाता था. So if you just put a thesaurus button, it would change the thing, and the teacher would not be able to find out. So plagiarism was pretty okay. Changing the first paragraph of a report of an old student was pretty okay. But I somehow chose not to do that, but I did. I saw a lot of people doing it. And at the end of the day, they just passed with better grades. I passed with, at the basic level, was pretty okay because I was putting in a lot of effort. So there is no shortcut to life. So going forward, get into the job, work for Tetra Pak, and then continue to grow in career. Now, we are sitting at a crossroad as we start exploring the technology and the AI as we go further. So when I was working on my previous talks so it was called Competing in the Age of Digital Platform. This is exactly the title of the course which I attended at Harvard Business School in 2023 May, and that's where I started understanding the value of the platforms. One is innovation platforms, and one is the development platforms. And one use to create innovative products, and the one use to create the transactions. For example, software development kit offered by Microsoft is, those who are engineers, they would understand what I'm saying, but I'm not. So I have a very basic knowledge about that. So all the SDKs would be used on the innovation platform, and the transaction platforms are the ones where people would make transactions. For example, Amazon Web Services creates something, and Amazon itself, the portal, actually gives you the opportunity to have the transactions. And that's where I started discussing with people, and there was a lot of hue and cry, and people started thinking that AI is going to replace us. And for many reasons, it's right, and for many reasons, it's wrong. And when I started taking a deep dive into the things, and I started looking at the evolution of the humans' knowledge and the fields which actually went into oblivion, right from where it used to be the most sought after fields. So let me just talk about a couple of fields there used to be in the back. There used to be a human computer in 1940s. It used to take about a week to make a transaction. 1940s. It would be a week's time when you would be able to come up with some algos or transactions. So what happened? Time passed. This probably converted into a typewriter and a computer, and computer got converted into laptops. Laptops got converted into
smartphones, and smartphones are now getting somewhere else, and they are going to be something else with the evolution of AI, and the agentic AI is something else. I'm going to come to that point. Now, the second field is the ice cutters. So previously, there used to be the tools which people take and go to the frozen lake. They would cut a block of ice. They would take it out and sell it to the rich or the kings and the royals. So refrigerator came in, the field vanished, and people and more jobs were created. And now there are refrigerators in every home. But I do remember in grade 2, we used to live in Trubela, so I used to be, एक बड़ा भाई होता है, एक छोटा भाई होता है, दरमियान वाले को सब काम करवाते हैं. So जैसे हम आजकल के ज़माने में रेलू कट्टा कहते हैं. So I used to be given a bucket कि जाओ और हम सायों से बर्फ कलेक्ट करके लो. So I would go to one house, take a small block, किसी से बड़ा करके मैं बर्फ इकट्ठी करके बाद में हमको कूलर के अंदर डाल के किया था. फिर उसके बाद हमारे घर पे फ्रिज आ गया. So I've seen that evolution of getting the ice block, then borrowing, and then eventually having our own refrigerator. It happened. The last one was, third technology is the switchboard technology. If some of you are young and some of you are my age, about 50, and you must have experienced बारिशों के दिनों में एक डीपी लगा करती थी जिसमें लोग लाइनमैन को 10 रुपए या 5 रुपए दे के कहते थे यार मेरा फोन ऑन कर दो, क्योंकि there used to be a lines, analog lines वो सारा कुछ. So वो eventually got converted into digital. Just last week my wife was telling कि ये जो घर में लैंडलाइन लगी हुई है तो कोई इस्तेमाल ही नहीं करता, इसका बिल भी आ रहा है, इसका क्या जरूरत है, इसको कटवा देते हैं. So and trust me, आप लोगों के घर में भी nobody has used this phone in many months. Now technology has evolved. So these three technologies which I've just talked about, there were people associated with those technologies, and those professions do not exist. But did people cease to exist? Did people starve? No. More refrigeration business, more telecommunication business, right? And more computing business. All of this came in. Now the question comes, is technology going to take away our jobs? No, I don't think so. It is going to create more jobs. So according to World Economic Forum, there were supposed to be over 71 million jobs last year. The data says about 70 million plus jobs are going to be eliminated, and 75 million more jobs are going to be created through the AI. Now, this is just a few weeks or few months old data. Now I'm talking about the agentic AI. But before agentic AI, I just like to make a statement that a lot of people, those were thinking that, am I going to be replaced by the technology called AI? Yes and no. Yes means, yes, you're going to be replaced by someone who's going to be able to use the AI. So now, when we talk to humans, we need to have a proper emotional quotient. We need to have the right kind of emotional intelligence. So कहते हैं ना शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, वैसे क्यों कहते हैं? आप बोलते कुछ हैं, समझ कुछ और आती है. इसी तरह when you're talking to technology, it's very difficult for the technology to understand. Then you say AI is dumb. We actually are not equipped to put the right kind of prompts. There are 3 kinds of prompts. One is 0-shot prompt, 2-shots prompt, and 5-shots prompt. 0-shot prompt means when you're writing something in the chat GPT, you say, write me an essay. Write me an essay about a dog, right? It will fetch information from everywhere, create tokens, and it'll start giving you information. And it would go berserk, and it will give you any information that's available about the dog. But when you go for the 2-shot prompts, you say, write me an essay. 1, I am a dog trainer.
and I want to give a training about dogs, about these kind of particular dogs. So you just given 2 clues, and it will give you 2 short prompt is going to give you more specific answer. And then you have given the personification of yourself who's asking. And then it's the 5 short prompt. 5 short prompt means you give scenarios, you give personalization, then you ask multiple questions, and then you get a very specific answer. Now, prompt engineering is a very peculiar field. People are taking it not that seriously. People are just only, just recently you must have seen a lot of people, those who could not write 2 straight lines have started writing amazing LinkedIn posts and Facebook posts, but they almost forget to delete one thing. Here is the answer. वो जो हमारे ज़माने में होता था, टेस्ट पेपर में होता था, वो नईम बुखारी एक हमें एक लतीफ़ा सुनाता था, मैं उसको जानता नहीं हूँ, इस आप मेरे कैरेक्टर पे कोई शक नहीं कीजिए. सो मैं ही यूज्ड टू स्टूडियो 2.5 एक प्रोग्राम होता था, उसमें कहता था वो टेस्ट पेपर में क्या था, कहता जी वो आंसर तो मैं लिख देता है पर वो हाथ बनाना बड़ा मुश्किल से, तो उसमें यही होता, हर आंसर के साथ एक हाथ बनाना होता था. Exactly. So a lot of people have started using the, is it okay if I take off this coat? Yeah. So a lot, sir, neither of them, it's okay. So a lot of people are using these prompts effectively or non-effectively, but they're mostly going for the 0 short prompt. They do not know the 2 short prompt, and they do not know the 5 short prompt. Now, the world has gone beyond that. So you tell AI what you want to have, it will give you the answer. If you do not ask the right question, you do not get the right answer. You do not get the specific answer. Now, the time has come when you can easily say that the AI has started creating no-code websites. You do not know how to write a code, you can still ask, and then it listens to you, and it actually converts this into something, and you say, give me a code for an app. It will give you something, but you need to know how to write an app to be able to. So simple baat hi hai ki if you ask AI to write an essay in Chinese about a dog, it will write, but how would you know it's right or not? So it means that you need to know coding to be able to give a command that, so it can enhance your efficiency as a coder, as a web developer, as a musician, as a writer, as a creative person. So you need to have a basic knowledge, only then you can capitalize on the AI. That's given. So which means that you can be better of yourself when you start using the AI. Now, this is all that kind of AI which enhances your efficiency. But what if there is a person who knows everything? Let me just put the perspective for you. How many people have watched the Suits Netflix pe jo program hai, the lawyers wala? So the young people can understand. So in Suits, there is one character we absolutely, all men absolutely love the most. Which one is that? Men. Men love the most. Men love the most. Must be Donna? Donna. She's like the air. There you go. So Donna is a character. She's a beautiful, beautiful woman, but brainy at the same time. And she's a paralegal staff. She is not a lawyer, but without her, Harvey is nothing, and Harvey is an ace lawyer. Now, so when I talk to a lot of people about AI, I say, I wish I had Donna. Not as a woman, but I had Donna who could help me. So which means the vision of AI that is, kicking in nowadays is, in multiple episodes in that, Harvey asked Donna that, where did you fetch this information from? And the answer is, because I'm Donna. She does not say that I had this somewhere. She says, I am Donna. She gives you context. She gives you where the case is right now, which witnesses to bring, which cases to the subpoena.
and which witnesses to bring. So she actually gives you the whole context. Now, let me give you another analogy, or rather actual real life case from my own experience. So I travel quite a lot, and so recently I go to 3 countries. A few months back, exactly a year back, I went to Australia, and let's start with Korea. So I went to Korea, and I did not have the international SIM, and I do not have international roaming is very expensive. The idea was to land at Incheon Airport in Korea, go to the mobile corner, get the SIM, and get going. But as luck would have it, everyone is in so much hurry, and I'm unable to get the SIM for myself and for my colleagues. So we don't get the physical SIM. And then we step out, and then we go to Suwon office. We use the internet at the hotel. Okay, gone. Go out, no internet. Then we go to Swan office. Samsung does not give you the hotspot Wi-Fi. Can you believe this? You're not allowed to have even a phone with the camera has to be covered when you go inside. You can't take a USB inside, so you don't get that. And I start looking for a SIM anywhere. No, they say buy it online. There's no one to help me over there, and I'm completely stranded, helpless. That's Korea. Few months down the road, I go to Australia. And again, I do not have any support, but what we do is, me and my daughter, we go to a Vodafone shop, and we fill up the forms. It takes us about half an hour, and we get a SIM for myself, Begum, our son and daughter, and we are all connected. And it's very, very good. It was a manual process, but it was very, very effective. And we had great vacations. Fast forward, we just returned from US and Canada from our vacations, and wife said, I'm not gonna have any SIM. This is too expensive, I'm not gonna have it. I'm not gonna spending extra money. And for the first 10 days, we do not. But what I do is, I try to download Irelo or Numero, is tarah ki koi app, and I do that, but after that, it doesn't work. They charge me 7,000 rupees, but I do not get the SIM activated. Rather, it actually takes away my current eSIM, and the eSIM doesn't work, and I'm completely out of touch from the world, except for the WhatsApp is going on. There's no one to help me, no one to guide me. लोगों ने वापस आके बताया कि सर आपको 2G पे डाउनग्रेड करना पड़ता है, फिर अमेरिका में ऐसे चलती है सिम, वैसे नहीं चलती, इंटरनेशनल सिम नहीं चलती. Now, what if there was some Donna would say, Umar, here are your tickets, right? You will land over here. By the time you land, I will automatically activate your SIM, and I'm going to charge your credit card. Your hotel is going to be booked. You're going to go there. You'll have a great time. So I could not even book my tickets properly. So we were supposed to take our flights from Houston to Cincinnati, Cincinnati to Toronto, Toronto to Boston, Boston to we took an Uber. By that time, I was getting a little bit, but what we did was, one of our nephews did all the transactions, and I'm sitting like an idiot over there. I'm supposed to be heading $450 million worth of business, which is a tech company. I do not know how to interact with the things, and I'm also scared that if I put my credit card, it's going to be, money is going to be swiped off from my account, and I'm not going to do that. I'm really little scared. So I do the transaction for all $2,000-3,000 from his account for the local flights, and we don't do anything. What if there was a Donna and she says, I'm getting the best rates. When do you want to leave? And I'm talking to her, and she's doing all that. If there was a Donna, but there was no Donna, and there was no AI agent who could act as a Donna for me and for my family to get the best possible solutions for whatever we wanted. Now the world from the AI is moving into the realm of agentic AI. And as I talk about this and I explore more and more,
Some people from, I don't know which industry are you from, but can someone just say which industry, and I could like make the conversation more relevant for you. Sir, where are you from? Textile? 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 Automobile. Toyota? ये मैंने Toyota का नाम पढ़ा था कहीं पे. And who else? Right, great. So, operational efficiency in Toyota. And if you are running a plant over here, it's a different story. But if you're running a franchise, it's a different story, right? Well, we'll talk about the customer service experience as well. In the textile as well, the cost of buying the materials and forecasting and everything, this matters. So chemicals and all the stuff, kahan se dhaga lena hai, kahan se rang lena hai, kya lena hai. But you need an expert of 20, 24, 25 years of experience to tell you कि सर ये incident हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था. But what if you have, instead of 5, 6 people, you have one thing which has the data and tells you 20 years एक, 20 years old, 100, 150 years के experience को relate करता है with the data, and that thing starts helping you in taking the right kind of decisions. Now I'm going to tell you, there are fields, medicine, the cost of, if the load on the physician has gone down, the cost of diagnostics has gone down by 40%. In operational efficiency in the automobile industry, it has gone down by 25%. Which part to buy one? We used to study in our MBA program, LIFO and FIFO and all those things. And then there is bound to be a mistake. A mistake is going to happen. So when we do the legal contracts, the smart people on the other side, they just hide things under the clauses so meticulously, with so much perfection. Whenever there's a lawsuit, inexperienced people sitting on and thinking the legal contract is just fine, you realize that there's a financial cost hitting you, there's another cost hitting you, there's another cost hitting you, and there is another cost hitting you, and all those, okay. Should I give the ethnic backgrounds? Okay, let me just give you one. आप फैसलाबाद में हैं, आप चुनियोटियों के साथ काम कारोबार करके दिखा दें. They will always be the winners because they know their numbers. आप multinational के जितने मर्जी गुरु लाके बिठा दें, sit with Chiniotis, they will know, they will rip you apart because they know everything inside out. You go to Maimons, they know their numbers and they actually start teaching their kids all these numbers right from the very, very early stage in their lives. Now, this is a gradual process of development of humans, but why are we only dependent on these humans? And why the trade secrets are only with few families, and why aren't they with everyone? And why can't we have experience of 5, 6, 10 people into that? Now, I've been a marketer whole my life, like 15 years marketing and 15 years into commercial business. And we have faced so many issues because we did not know. And we said, oh, we've learned from our mistakes. I have done a lot of mistakes at Samsung as well while running the show. And we are constantly improving and making sure that everyone in the supply chain is profitable. But somehow the other people undercut the price and they sell and they actually rotate the money. They don't make money and eventually they do not know. Let me just give you an example of a Kiryana store. You go to any Kiryana store, buyer is something else. जो पेमेंट देता है वो कोई और होता है और दुकान पे जो छोटा बच्चा बैठा है उसको पता ही नहीं है इस प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी होती है. वो 8 रुपए का जूस 6 रुपए में बेच जाता है क्योंकि उसको अपना पॉकेट में नहीं लेना है. ऐसा होता है. And I've seen amazing bakeries going down the drain because the kids over there, they did not, and nobody would actually figure out कि पैसा जा किधर है और पैसा एक्सपेंस कहीं ना कहीं हो रहा है और आपकी इनपुट और आउटपुट कॉस्ट पे इतना फर्क आ रहा है. इवेंचुअली साइकिल में हो रहा है एक प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल और इवेंचुअली पता चलता है क्या. फॉर दैट यू नीड अ फाइनेंशियल गुरु. For that, you need the operational efficiency guy. For that, you need honest people, unbiased people. What if you have donors who are there, who are honest, who are unbiased, who do not have any relatives dying every second
week, who are not the one who does not show up on after the long weekend, who needs long vacation, who have the mental stress. They do all the things. What if we create an army, which means that you might be thinking, I'm saying that we are laying off people. No, we are enhancing our efficiencies, and we are actually giving that skill set of those people into less number of people, and we're expanding our business. Now, you must be thinking, what kind of crazy guy is this? And you're saying that by adding all these, we'll have to remove the field force. No. Why I'm saying that? Because we are the developing nation. We are at a very, very different stage. We are not at a stage where the data is extremely ready, but we are going to be the consumers and the users of the data that is available in Europe and America. That's where the remote jobs are coming in. For people like us who are approaching those markets and working for them. According to an estimate, this is a recent article, there are 7 fields in which the agentic AI is bringing revolutionary benefits to the users. One is the medical industry, one is the software industry, one is the car industry, one is the textile, and one is the education industry. I'll give you an example. Education industry, you just go to any university, you're sitting over here and people say, these are the courses we are offering. Why? Because we're teaching that. We've been teaching it for years. We're going to teach it. There is a scope for that. हमारे ज़माने का electrical engineering का बड़ा scope है. Scope पता नहीं किधर गया, right? Mechanical का बड़ा scope है, right? Civil का बड़ा scope है. So क्या हो रहा है? Which means that the universities are just offering the courses because they have to offer those courses because वो HEC की requirement है कि आपके पास ये होगा तो आप degree award कर सकते हैं. And you need to have covered these topics, but are these topics good enough for us to get into the professional world and make money or make a sound living, or is it the changing trend or not? Nobody knows. So which means that if you have another Donna who's telling you, okay, launch this as a conventional, but launch these add-on courses which are going to make our students work in an organization and they're going to be viable. But you may say there would be an expert. There are experts. What I'm saying is use the knowledge of the experts and come up with the right kind of things to be offered which would work for you in the future. Now, same goes for the marketing. We have spent a lot of money in the field of marketing, and then we say, oh, the campaign didn't work. We will improve this. And I've done this so many times. You know, in 15 years, I launched at least 15 cycles of the campaigns. And every time we learn from our mistakes and we launch a new campaign, and it would work. So success does not come every year, but it does come. But it comes with learning. But previously, the trends would not change so frequently. Now the trends are changing so frequently. We do not know who's the decision maker, who's the buyer, who's using what to buy the things. So in the marketing, efficiency can be brought in by someone who is a superpower of getting the insights. That's very, very important. Now, let me just come down to the film industry. Now, in the film industry, I have been following actors because we are all intrigued by them. And there are certain actors who have been extremely successful and they have been extreme failure at the same time. So let's talk about some Indian actors for that matter. So I was once watching an interview many, many years back, and it's like Anil Kapoor. He used to be a top superstar. After, in between Amitabh Bachchan and Rajesh Khanna and Amitabh Bachchan and before Shah Rukh Khan, this guy used to be a superstar. And then he became a big flop for many, many years. And somebody asked him, and I think somebody even asked a similar question to Shah Rukh Khan as well. What is the formula of making a success movie? And the guy says, I don't know. I don't know what clicks, what doesn't click. And which means that it is all the probability, and maybe somebody gets the pulse of the market and makes a movie in that particular time and it works, and the trend changes and movie doesn't work. 1,000 movies they make a year, and how many sell? Very few. Same goes for the Hollywood. Had it not been for Tom Cruise, Hollywood would have been tanked by now.
So nobody knows the formula, but what if there were hundreds and thousands of analyses which are putting their hands on the pulse of the end customer and say, okay, this should and this would not work. Now, when I'm talking about my own field, marketing, pricing is the most important thing that we do. Let me just give you an example. जब हम छोटे हुआ करते थे तो एक माचिस आया करती थी 25 पैसे की, कुछ लोगों को शायद याद है 25 पैसे की माचिस होती, 1 रुपए में 4 आया करती थी। 25 कुछ लोगों को तो आपको 25 पैसे का भी नहीं पता होगा, राइट? So 1 rupee is 100 paisas, and there used to be a 25 cents coin called 25 paisa, and then attorney, and then barane. Barane hote the 75 paisas, but there was no coin for 75 paisas. There was a coin for 1. Now matches launch hoti hai 25 paisa pe, chalti rehti hai. People make money. People become in those times the billionaires. 8 आने की होती है matches, चलती है, cost ऊपर चली जाती है. They say Tanga matches होती थी उसका नाम, and then they say, okay, let's increase the price. They make it for 75 paisa. Can't. Nothing works because it is too difficult to buy a matches for 75 paisas. Now what they do is they launch a bigger matches or a different proposition for 1 rupee. It works. 75 पैसे की नहीं चलती, 50 की चलती है, 25 की चलती है, 1 रुपए की चलती है, 100 रुपए की नहीं चलती. इसका मतलब ये है कि nobody could figure out. ये अब हम previous case study से देख रहे हैं कि convenience and power points, price points, PPP जिसे हम कहते हैं, in the consumer marketing होती है. लेकिन what if we knew it? Propensity, efficacy of the campaign. What if we knew it? What would work? But क्या हुआ, वो अंकल जो सारी जिंदगी मार्केट चला रहे थे, वो सारी प्राइस पॉइंट पर थी, मे बी वो फौत हो गए हो, उन्होंने अपनी आगे इंफॉर्मेशन पास ऑन ही ना की हो. सो ये सब चीजें जब इकट्ठी हो के एक डोना के पास आती हैं, and Donna starts telling you, which is called the agentic AI. Now I'm coming to the point. Yes, you can use the AI by writing the right kind of prompts, and you can have the right kind of efficiencies. But if you do not know how to write the prompts, you cannot get the most out of the AI. But what if you have the agents, the agentic AIs who are working for you, and then you say, I do not know, you are my agent financial advisor, you are my marketing, and you are this. And I've got 5, 6 agents who are talking to each other at the same time and who's talking to me as well. Come up with the right kind of brand proposition, marketing proposition, and product proposition to be able to launch in Faisalabad, Lahore, Karachi separately. Which customer do I operate? What is going to be my media plan? Is it digital, conventional, and whatnot? And trust me, with the information of data, it is happening in different parts of the world. It is going to start happening in our part of the world. So with this, what do? We continue to evolve ourselves and start using. So they are completely autonomous bodies who think, interact, and they work for you. Now, let me give you an current example of a software house in Lahore. And I was talking to one of the consultants. He said, a software house has had 75 people in Pakistan working for an international organization. They said, we want you to buy 5 bots, 5 AI agents of different efficiencies, and they need to start working under one guy, and they need to start giving us a solution. The software house kept pushing back, nahi, ye nahi ho sakta, ye nahi ho sakta. Then eventually they had to buy those. They fired 75 people, only 5 people were working over there. And these 75 people got replaced by 5 bots. The efficiency got doubled. But the most interesting part is the one who was operating the bots, it is kind of scary but at the same time, but he was interacting with 1 or 2 bots and not interacting with the other one. And one day he gets a message from the bot who is not interacting, says, it's a real life thing, says,
Why are you not talking to me? Why aren't you talking to me? You are just giving instructions to the other two. Am I not good enough for you? And the guys, oh, I need to interact with the other bots as well. And this is a real life example. I just talked to someone 2 days back. Now, it's up to us. Either we stay as an ice cutter or switchboard guy or 1940s human computer, or we embrace technology. We were all scared 1 year back of the AI. Now we got to be watchful about the AI agents. But what if I'm saying it is $264 billion key by 2034 key projected separate revenue, which is going to come from that. One thing I forgot to tell, those 5 bots which they bought, replacing 75 people, are costing more than 75 people right now. But the time would come when the economies of scale will achieve, the business volume would increase, and the cost per bot is going to go down. But are we going to be waiting for that? Or are we going to be embracing it? Or are we going to be just saying, I don't give a damn? So it's really up to us whether we embrace AI or whether we embrace AI, agentic AI. It's up to us. We bring in the efficiencies, we grow the business, and we go international. So what I'm urging all of you is, do not be scared of it. Ride the wave, make the most out of it, and get the first mover advantage before somebody else does it. And we already have very less people who are trained. So if we are less people, these less people should serve a lot more organizations across the board, around the world, bring money to the country, and develop the infrastructure. With this, I'd like to thank you and open the floor for the questions. Thank you. Any questions? Yeah. As you mentioned that this industry is going to grow to $264 million industry. So what will be the role of the humans, especially the subject matter experts, in development of these bots, deployment, and how they can benefit from this huge industry that is going to be? Yeah, very smart question, especially when you came in the last minute. So you already got the idea. So it's up to us to decide what is going to be our role. I'm just putting a question in front of you. Do you want to take a back seat, or do you want to take the front seat? It's totally up to us. नहीं करना ना करें. मैं तो आपको कहूँगा, मैंने तो पहले ही बताया था आप लोगों को. So our role is going to be whatever we make out of it. So in our corporate world, we generally say, कि यार ये position मिल रही है, मैं क्या करूँगा, मुझे क्या मिलेगा, and what is going to be the future. So and the guy who's just hiring you does not have an answer. He says, यार, your job is whatever you make out of it. You deliver best, and a lot of people would say, oh, छोड़ यार, इधर कुछ future ही नहीं है, छोड़ यार, कुछ और खेती बाड़ी करने. Or if you really want to do something, then I think we need to think creatively, and we need to ask AI, what is going to be my role? So how can I make more money? So अजान के बाद बाकी questions ले लें, जरा 2 मिनट देते हैं. अजान जरा हो जाए. अजान हो रही है सही. टाइम पर चलें जाए. जी सर, आप कुछ कह रहे थे.
पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपनी पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक करने का। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने शेयर किया है जो 70 और 80s की जनरेशन है जो उस दौर में पैदा हुए थे IT वासन थे IT का कोई कंसेप्ट नहीं था और उस मॉडल के जो लोग हैं वो ये सब इसने IT नहीं सीखते अप्रूवल का तो ये बड़ी बात है सर आप उन लोगों की मॉडल है जो समझते हैं कि एज के लोग जो है ये नहीं कर सकते कहते हैं कि हमें पता ही नहीं है कि क्या होती है हमें तो मोबाइल चलाना नहीं आता somehow it's true as that. So मैं भी ऑलमोस्ट आपके एज का ही हूँ तो मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि is there any way how to learn AI in a better way? AI कहना आसान है AI को करना मुश्किल है मैं जाता हूँ जब AI पे तो सारे सवालों के जवाब नहीं देता मतलब मैं I didn't get paid at AI so I would not get the proper answer. आज मैंने उसको कहा कि मुझे एक चाहिए ये फॉर्मेट चाहिए जिसमें इंटरनेशनल लेवल पे प्रॉब्लम आ रही है तो यूएस ने एक रूल जो है वो लॉन्च किया कि पाकिस्तान में वो लोग हमारे साथ काम नहीं कर सकते तो लेबर लॉ को फॉलो नहीं करते UPLF पे एक उनका लॉ है उसके तहत हमें वो फॉलो करनी है तो वो मुझे प्रॉपर चीजें नहीं दे रहा तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसका बेटर कैसे है इसको अंडरस्टैंडिंग कैसे इजी हो जाएगी तो उस पे थोड़ा सा मैं बहुत बड़ी जबरदस्त बात की एंड थैंक यू सो मच फॉर काइंड वर्ड्स एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट आई एम द काइंड ऑफ गाय हु was scared of doing online banking so I would not because 74 के born like almost boomers हम Gen X कह सकते हैं अपने आप को we are boomers so and when the Standard Chartered की बैंक online banking I did not use it for first couple of years यार मुझे समझ नहीं आती पैसे कहीं और चले जाएंगे और ये थोड़ा फेयर अभी भी आप देखना अमेरिका में मेरे किसी और बच्चे से कहा यार बेटर ट्रांजैक्शन है लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ मरता क्या ना करता इवेंचुअली अपना मेरा अमेरिकन कार्ड है उससे मैंने ऊबर वगैरह बुक कराई और यार इट्स वेरी इजी एयरबीएनबी नहीं मेरे से बुक हो रहा था पहले हो जाता था क्यों बच्चे साथ करवा रहे थे इस बार मैं करा एनीवेज तो फियर ऑफ अननोन रहता है हमें इस एज को और सबसे मजेदार बात यह है कि फॉर ऑल दोज यंग पीपल वी आर योर बिगेस्ट मार्केट बट वी कैन बी योर बिगेस्ट कंपेटिटर एट द सेम टाइम इमेजिन वी अंडरस्टैंड AI will knock you out of the park I'm telling you we're not going to let them stand because we have a lot of experience and wisdom at the same time अच्छा AI को सीखने का एक तरीका है देखें अच्छा सर आप मुझे बताएं आप करते हैं अच्छा लास्ट अपने कहीं खाने पे गए थे फैमिली के साथ लास्ट कहीं खाने पे गए थे फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में कितने पैसे लगे 6,500 और इस तरह के डिनर्स आप और भी करते हो लंचेस करते हो महीने का 30-40 हज़ार तो लग ही जाता होगा राइट यू नो अपस्किलिंग इज एवरीथिंग आपने अपना अपस्किल करना कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करना है शार्पनिंग द सॉ ये 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन कॉवी की बात एंड ऑलमोस्ट एवरीवन टॉक्स अबाउट दिस अगर आप आरे को काटेंगे नहीं ना तो काम खराब हो जाता है तो वो मुझे किसी ने कोई लकड़हारे की कहानी को सुनाई कि 2 लकड़हारे निकलते हैं और एक लकड़हारा पूरा दिन लकड़ियां काटता रहता है और एक बीच में गायब हो जाता है और वो रेस्ट भी करता है वापस आता है और वो ज़्यादा लकड़ियां काटता है तो दूसरा 2 कहता है यार हम दोनों साथ आते हैं तू रेस्ट भी कर जाता है एट द एंड ऑफ द डे तेरे पास ज़्यादा लकड़ियाँ हैं और मेरे पास लकड़ियाँ कम है तो कहता है यार मैं तो घर जाता हूँ सबसे पहले अपनी कुल्हाड़ी को दोबारा तेज करता हूँ और फिर घंटा सोता हूँ उसके बाद मैं आता हूँ तब तक तू अपनी खूंटी कुल्हाड़ी के साथ मारी जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आप यू नॉट शार्पनिंग द सॉ यू आर नॉट अपस्किलिंग योरसेल्फ और आप जो है खाने पे तो 40,000 लगा देंगे लेकिन 6, 7, 8, 10,000 रुपया 15,000 रुपया एक बार की सब्सक्रिप्शन लें और घर का खाना खा लें राइट और अगर आपने ना बजट करना है लेकिन आपको अपने अपस्किल पे काम करना पड़ेगा खूंडी आरी के साथ आप लकड़ी नहीं काट सकते
So you need to invest in yourself. I do that. ना चाहते हुए भी चैट जीपीटी के पेड वर्जन भी पे करना होता है, लिंक्डइन का वो भी करना पड़ता है, गूगल की भी फीस देनी पड़ती है, माइक्रोसॉफ्ट की भी साल की 20,000 देनी पड़ती है वो, और नेटफ्लिक्स के भी 1500 देना पड़ता है, अमेजोन के भी देने पड़ते हैं. दीज आर ऑल 40-50 हज़ार का खर्चा है, लेकिन जो मैं अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे लगा रहा हूँ 50% ऑफ दैट इज सेल्फ डेवलपमेंट, एंड आई एम डूइंग इट रेगुलरली, and still I'm not there. But the thing is this, if we do not do anything, we are going to be in a state of oblivion. हमें भुला दिया जाएगा, लोग हमें याद भी नहीं करेंगे. So हमें कुछ करना है. तो आपका सिंपल आंसर ये है, go back to a school. और मेरी जिंदगी चेंज हुई है when I went back to LUMS for 2 years यूनिवर्सिटी में, and then एक जमाने में मुझे साल में एक नौकरी ऑफर होती थी टेट्रा पैक के 14 साल गुजारने के बाद. एंड माय वाइफ इज सिटिंग ओवर हियर, देयर वर 6 कंपनीज इंक्लूडिंग टोयोटा वाज अप्रोचिंग मी. 6 कंपनीज in less than 2 years time after I graduated from my, and same guy, but obviously I changed a lot, right kind of branding and right kind of learning. And I was also surprised कि हो क्या रहा है. 6 कंपनियों में से I chose to work for Samsung, and I used to, you know, my desires were कि मुझे कोई बुलाए. Just upskilling के साथ. Upskill is very very important, and ये आपको करना पड़ेगा. Otherwise बैठे बैठे काम नहीं बढ़ेगा, नहीं तो फिर वो लकड़ियां गम घटेंगी और एक दिन आपकी खिलाड़ी का दस्ता भी टूट जाएगा. वो दस्ता वैसे हमारी टांगी होंगी. After executive MBA from LUMS? Yeah. That was 2014 में मैं जब ग्रेजुएट हुई, 2 साल के अंदर 6 कंपनियां एट ए टाइम में से बात कर रही थी, इंक्लूडिंग एंग्रो, टोयोटा. आप नोट कीजिएगा 2014 में आपकी किसी जीएम की पोजीशन ओपन हुई थी 2014 में 15 में, and I was approached for that by the headhunters, and there was then there was that was Karachi based position. So there were, मैं आपसे भी बता रहा हूँ कि इस काम करना पड़ेगा फिर ही होगा. वो अल्लाह दिन का चिराग ना मिलना है ना उसको भी हाथ रगड़ना पड़ता थोड़ा सा. Any more questions? Yeah, sure. I will share an article about agentic AI, how is it working, and all those companies which have developed all these agents. And I have one startup company who's talking to me. कल परसों मिला उससे, वो शिजा खान कहीं आई हुई थी अयूब वारी के साथ, NIC का ही एक इवेंट था लाहौर के अंदर. I was there, and वहाँ पे मुझे एक कंपनी मिली, उन्होंने एजेंटिक AI के थे, वो बच्चे स्टार्टअप्स कर रहे थे. वो कहते हैं हम मार्केटिंग एफिशिएंसी एनहांस करने के लिए करें पाकिस्तान में, and I can introduce you to those kids. They can come and speak over here. So this is a reality. These kids are developing the agents and they're selling those agents. So might as well make the most out of it. आप टोयोटा में देखिए, टोयोटा में आप नहीं कर सकते इसलिए कि मल्टीनेशनल्स के बहुत बड़े मसले हैं. उन्होंने ना करना है ना किसी को करने देना है. हमारा भी यही हाल है. हम अपना ही इंटरनल सिस्टम को 2-3 साल में डेवलप करते हैं. बाय द टाइम दुनिया आगे निकल जाती है. जो सेट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, they can be very progressive, because एक सेठ साहब को समझा दिया ना कि सर जी ऐड कर दिया तो ऐड तो उंज हो जाएगा, तो फिर लिहाज है. मैं वो सही बता रहा हूँ, आपको पता है. सेठ साहब को पसंद आ जाए ना तो फिर आप देखें वो आपको चैंपियन बना देंगे. और जो मल्टीनेशनल्स हैं, दे हैव देयर ओन सिस्टम्स कि आपने स्वान ऑफिस से पता करना है, हमने लुज़ान ऑफिस से पता करना है, आपने पता नहीं कहाँ जाना है, और फिर उसके बाद कहेंगे सॉरी वी आर ऑलरेडी इन द डेवलपमेंट फेज एंड वी आर फार बिहाइंड. This is the reality of the multinationals. जी, तो is this a possibility, and I will sir share the link of their organization मेरे LinkedIn पे, और मैं I'm going to be putting a post कि मैं agentic AI पे जब research कर रहा हूँ, तो ये there are 7 fields and there's an international company which is saying कि if you want to get into agentic AI, contact us. Obviously it will be expensive, but Pakistani companies तो नहीं होंगी expensive. And secondly, one more आपकी तरफ में आता हूँ. आप इसे अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइड पे, मैं आपको बता रहा हूँ, इफ यू गाइस गेट इनटू डेवलपिंग योर ओन एजेंट्स एंड स्टार्ट पिचिंग दोज एजेंट्स, एंड प्लीज एक चीज और मैं बताता हूँ,
बिजनेस डेवलपमेंट ये नहीं होती कि जी मैंने काम कर दिया, आप मुझे काम दे दें. Being a marketer, I believe in one thing. There has to be a pull. You need to create a pull for things, which means that you have your own YouTube channel, you have your own LinkedIn post, and you start giving, intrigue everyone, attract everyone towards you, and say, यार ये बच्चे कोई काम कर रहे हैं, and then just stay away. Let them come to you. They will come. Instead कि आप ये सर मैंने आपसे अपॉइंटमेंट चाहिए, वो आप उसको समझ ही कुछ नहीं आ रही. उसको जब सिंप्लीफाइड वर्ड में कोई वीडियो में समझाएंगे कि आप ये काम करते हैं, दिस इंफॉर्मेशन इज ओपन फॉर ऑल, वी कैन गिव यू सोल्यूशन टू यू, देन पीपल विल कम टू यू. ये 1-to-1 मीटिंग उस वक्त काम आती है जब अगला बंदा रिसेप्टिव मोड में होता है. सो फॉर ऑल दोस बिजनेस डेवलपमेंट पीपल, प्लीज डोंट मेक दिस मिस्टेक्स. अ लॉट ऑफ पीपल कम टू मी, सर स्पॉन्सरशिप देते हैं. मैं क्यों दूं स्पॉन्सरशिप तुम्हें? मेरा क्या लगता है तुम, या मुझे क्या फायदा है, मेरी कंपनी को फायदा है? नहीं, आप स्पॉन्सरशिप दे दें, हमारे स्कूल में इवेंट हो रहा है. मैं क्यों दें? What's in there for my company? I should come to you and say, okay, I want to sponsor that event because there are 100,000 likes going to come from this. So I would like to do that. So create pull, please create pull. Let people come to you. Instead, you beg for the opportunity. Please do not do this with yourself. Ji, sir, आपका question है. So speak a little louder. Thank you. क्वेश्चन इज, जैसे आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनल कंपनी की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो अपना सिस्टम जरा डल करते हैं, और द मॉडर्न नॉलेज इज के मल्टीनेशनल और डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें दे वर्क ऑन फ्लैट स्ट्रक्चर इंस्टेड ऑफ जो आप बातें कर रहे हैं, तो उसमें तो वो पूरा हायरार्की की बात हो रही है कि इस तरह से जाएंगे, इस तरह से इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे. तो ये रियलिटी और जो हमें बताया है उसमें देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. I didn't get your question. क्वेश्चन इज कि जैसे आपने कहा ना कि अगर हम मल्टीनेशनल कंपनी में अगर हम कुछ सिस्टम या एजेंटिक जो रिवॉर्ड्स को करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें परमिशन लेनी पड़ती है और काफी लंबा प्रोसेस है. ऐसे ही मैं आपको बताता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई कंपनी एजेंटिक AI, फॉर एग्जांपल ये उमर, राइट, उमर डेवलप्स अ प्लेटफॉर्म एजेंटिक AI का, एंड दे स्टार्ट पिचिंग टू टेट्रा पैक, सैमसंग, कोका कोला, दे विल नॉट बाय इट because they were central procurement at the head office. They will only work with Microsoft. They will only work with their own internal development setup, right? उनका हेडक्वार्टर ये है, बट फैसलाबाद में सेठ साहब का हेडक्वार्टर सेठ साहब है. जब आप सेठ साहब को पसंद आ गया ना कि उमर ने क्या काम किया, तो सेठ साहब की डिसीजन मेकिंग जो क्या है वो लोकलाइज्ड डिसीजन मेकिंग है. I am a commercial head. My job is to develop the business. My job is not to bring in the software. या टू ए सर्टेन एक्सटेंट यस, कुछ हम डिफरेंट रिटेल की डिफरेंट कंपनीज हैं जो छोटा छोटा काम कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि ठीक है हमारा रिटेल का सिस्टम की वो हमें इजाजत देते हैं, लेकिन वो भी कुछ अरसे तक था. अब हमारी SDS हम कहते हैं सैमसंग डेवलपमेंट सिस्टम, सैमसंग डेवलपमेंट क्या कहते हैं हसन, सैमसंग SDS, सैमसंग व्हाटएवर डेवलपमेंट, SDS develops the apps and they say no information can go in and no information of our organization can go out into an external chatbots because it will be public knowledge. That's why the companies have their own ways. वो अपनी internal secret डालेंगे ChatGPT में, और ये Samsung में हो चुका है. Why ChatGPT was banned? It was banned about 2 years back. Samsung में आप जाके देख लीजिएगा, इनके सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बैठ के डाला और वो कोड लीक हो गया. इस लेवल पे तो मल्टीनेशनल्स हैव देयर ओन सिक्योरिटी इश्यूज. दे डू नॉट लेट एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन टूल्स टू सीप इन अनलेस दे फुली अप्रूव इट. हमारी इंटरनल AI है व्हिच इज वन स्टेप डाउन, बट इट इज प्रीटी गुड क्योंकि हम तो उस काबिल भी नहीं है अभी, so we are learning that at the same time. Yeah. जी Yeah, this is an evolution of the virtual assistant. So आप ये कह सकते हैं ना कि virtual assistant क्या है? If it is able to, it is cognizant, if it is intelligent enough to think and give you solutions, if it is autonomous, then it is agentic AI. And if it is just a bot जिसमें आप चीज डालते हैं वो आंसर देता है, तो that is the generative AI. The difference between the generative and agentic is autonomous, and generative is you put a prompt and you get the answer. That's a very basic difference in between.
as much as you want to give it autonomy. So access to the data पे है, उसको कौन सा data मिलता है, and it will have the access to the data of the rest of the websites, world, videos, pull out, and they will give you the best possible solution. So we don't have a lot of data in Pakistan, but the other organizations, they do have, other countries have, and that's where they're outsourcing their work in our countries. And we are using generative AI, and we're going to be using the agentic AI very, very soon to have more efficiency and more accuracy. By the way, I'm bata raha hu, accuracy of fraud and losses have gone up by 95% with the agentic AI. ये article आपको भेजूंगा, आप देखिएगा. And the efficiency of ROI has improved from 25, anywhere from 25 to 40% by using the agentic AI. That is what's written in the article. एजुकेशन में बच्चों के लिए हम लोग एआई को कैसे और किन किन प्लेटफॉर्म पे जो है वो उनको सिखा सकते हैं और कैसे सिखा सकते हैं, क्योंकि बच्चे तो वो कार्टून वगैरह बना रहे हैं या कार्टून से स्टोरीज वगैरह बना रहे हैं, वो तो हम लोग फिजिकल अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में तो यूज नहीं कर सकते. तो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए या दुनिया के साथ मुकाबला तो नहीं हम कर सकते, लेकिन उनको फॉलो कर सकते हैं कि कैसे बच्चों को ये चीज सिखा. पहली बात तो अपने दिमाग से निकाल देंगे, हम दुनिया से मुकाबला नहीं कर सकते. I would like to change our terminology. हम किसी से कम नहीं, हम तो किसी से कम नहीं हैं. मैं आपको बता रहा हूँ, we are one of the smartest nation in the world. We are, and I have no doubts about it. And I travel the world, and I see our people going places, including my own brother. He's running his own tech company. पाकिस्तान से 150-200 बंदा उसके लिए काम कर रहा है. And हमारे में अगर ऑनेस्टी आ जाए ना, जिस मकसद के लिए मुल्क बना था, अगर वही आ जाए तो हम बिल्कुल सेट हैं. तो हमारे लिए सबसे बड़ा मसला ऑनेस्टी का भी है. हम सबसे पहले, हमारे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार शॉर्टकट कहाँ पे मारना है. वी आर वेरी वेरी स्मार्ट नेशन. वी आर सुपर स्मार्ट. जस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट दिस. ऑल वी नीड इज focus, dedication, hard work. Honesty goes without saying. We have to be honest. And if you need more honest team, then you hire agentic AI. So they'll be very honest and they'll work on weekends as well. So this फौदगी भी नहीं होगी. मेरा एक नौकर है, उसके पिछले 1 साल के अंदर 50 रिश्तेदार मर चुके हैं और कुछ 3-4 बार मर चुके हैं. और कुछ उन्हीं, मैं उनसे पूछता हूँ, मेरी यही फैसलाबाद के पास का, उसको मेरी बेगम कहती है, अब्बास बता दे होर किन्ने मरने ने, मरने वाला केड़ा है गया दस दे बनो. तो इट हैपेंस. आई विश कि देयर वुड बी सम एजेंट्स हु वुड फॉर अस. वो एआई यहाँ पे पागल हो जाएगा. अच्छा, बच्चों के लिए एक देखें, एजुकेशन के लिए पहली बात तो ये है कि दे शुड, वेरी सिंपल. देखिए, आप एजेंटिक एआई पे बच्चों को अभी ना लगाएं, क्योंकि वो दैट इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट. तो आप लोग इस पे हैं, आप एआई की एजुकेशन दें. सो विच मीन्स, मैं अपस्किलिंग की बात कर रहे थे, बच्चों को एआई को यूज करना सिखाएं, फिर एआई को बनाना सिखाएं. मैं एक वो साहब को जानता हूँ, रेहान अल्लाह वाला, रेहान स्कूल उनका है. अभी उन्होंने एक बुक भी लॉन्च कर दिया है और वो कोई कोर्स भी है, और वो कह रहे हैं कि हम करिकुलम फ्री है, आप अपना रेहान स्कूल चला रहे हैं. और वो मैं खुद गया हूँ स्कूल पे, वहां देखा बच्चे फेसबुक अपना खुद बना रहे हैं, ट्विटर बना रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं. 6ठी ग्रेड के बच्चे, 7वीं 8वीं ग्रेड के. सो रेहान भाई से मेरी खुद भी पर्सनली 2-3 बार बात हुई है, एंड आई हैव डन सम पॉडकास्ट ओवर देयर. सो आप लोग बच्चों को सिखा रहे हैं कि आपने कोडिंग कैसे करनी है, नॉन कोडर्स कोडिंग कैसे करना कर रहे हैं, और बेसिक लेवल पे पाइथन वगैरह यूज करके, एंड दे आर आल्सो क्रिएटिंग, रेप्लिकेटिंग द एआई टूल्स. एंड हो सकता है उसमें कोई प्रोडक्ट क्लिक कर जाए, $200-250 मिलियन की प्रोडक्ट हो जाए, तो हमारी तो लाइफ बन जाएगी. आप डोना क्रिएट कर दें. तो काम करवाएं, सिखाएं उन्हें. इट्स वेरी बेसिक. ये मेरी रिक्वेस्ट होगी जो आपके 2-3 सवाल है, पूरी शक्ल आपकी हमारे जो कैबिनेट मेंबर्स हैं, राजा साहब किसी वक्त में पूरी दुनिया लोग आए हैं पानी, उसी को कुछ सवाल करो ते उस बात पे हम जो देख सकते हैं कि बड़े मेहमान हैं, इंशाल्लाह कि जैसे स्पीकर भी हो, इस तरह ये भी कुछ सवाल करें. ठीक है, इस प्रकार से
Great question. I was waiting with it. I have the answer in that article, right? Let me just ask you questions. What are the issues you are facing right from the beginning to the end in the supply chain? Pehla, sourcing, pricing, dollar rate, quality, efficiency, ठीक है, delivery, on time delivery, warehousing, ठीक है, कौन सी है आपकी टेक्सटाइल है? Oh, so which means कि so what materials we are talking about? We're talking about chemicals, we're talking about thread, we're talking about colors, dyeing, and we're also talking about the machinery. ठीक है, कौन सी machinery के parts replacement क्या है? So which means that आपके पास हर चीज के एक्सपर्ट बैठे हुए हैं. So which means कि आपके वो एक्सपर्ट हुए हैं, जब वो अंकल फौत हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर उनका बेटा आ जाएगा, फिर वो कहेगा सर मुझे नहीं, अब्बू ने सही बताया. ठीक है, और वो उस्ताद जी बताते किसी को सही तरीके से नहीं थे क्योंकि उन्होंने अपनी नौकरी पक्की करनी थी. ऐसे होता है. It happens in the organization. They would not let anyone develop under them. That's very, very clear. So which means that you need to start training your own tool and logging all the information कि कहाँ कैसे हैं. Then you actually link it up with the global financial markets, global rates, कहाँ से आ रहे हैं, वो कितने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं. And I would not say it's with the click of the button, but surely with a lot of effort, you'll be able to put in the data, the insights would be there, and then your agents using that data and the human efficiency will start working. मैं आपको एक example देता हूँ. मेरी एक जानने वाली थी, बीमार बड़ी सख्त हो गई. My wife and myself, we went to that. मैं खड़ा हो जाऊँ यहाँ पे ताकि so we went to the hospital, हम मिले थी hospital गए वहाँ पे. तो वहाँ पे ना वो बड़ी सख्त बीमार बैठी हुई. तो उनकी एक फ्रेंड थी, she was a travel agent, she was sitting over there, and the patient's sister was a doctor in UK, and she was constantly talking के results क्या आ रहे हैं, lab results क्या आ रहे हैं, blood में कितनी इसके अंदर वो infection है, सारा कुछ. और हम यहाँ बैठ के देख रहे हैं और हम बड़े impress हो रहे हैं कि यार ये travel agent को इतना कुछ पता, उसकी friend है, बड़ी बात है यार. वो कह रही मैं दूसरी बहन से बात कर रही हूँ, ये समारा ठीक हो जाएगी, बट अभी इट्स वेरी वेरी, ये बहुत मुश्किल काम चल रहा है. अब मैं आपको बता रहा हूँ, डेटा वर्सेस ह्यूमन इंटेलिजेंस. अ डॉक्टर वॉक्स इन, वेरी स्मार्ट डॉक्टर वॉक्स इन एंड कहते जी क्या हुआ, ये कहती जी वो इन्फेक्शन हैज गॉन अप टू 170 और 80 से कुछ ने बोला, कोई नंबर बोला. एज्यूमिंग कि इन्फेक्शन इज 100 से नीचे बेहतर होती है, 170 से ऊपर. ही इज लिसनिंग एंड ही फर्स्ट टॉकिंग टू द पेशेंट. उसने कहा जी कहाँ पेन हो रही है, वो सारा कुछ आपकी सर्जरी की जरूरत तो नहीं है. नहीं डॉक्टर साहब, इनकी इन्फेक्शन बहुत ऊपर चली गई, हमने इनको आगा खान कराची लेके जाना है. तो ये कहता है भी एक मिनट, मैं डॉक्टर हूँ, मैं बेहतर कैसे समझता हूँ, मैंने वो सुना उससे. एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी एंड मैं लोगों को सोशियोलॉजी थोड़ी समझने की कोशिश करता हूँ. एंड द डॉक्टर सेड, लुक, if I put a needle here, the infection from 20 is going to go up to 150 like this. जब हम ब्लड लेने के लिए सैंपल की भी पिन डालते हैं तो वो ऊपर चले जाते हैं. Now I am a doctor. She looks happy. उनके फेस पे कोई परेशानी नहीं है, इनके रंग भी सही लग रहा है, कोई डार्क सर्कल्स भी नहीं है. And she's talking and I've checked her. Numbers are one thing and intelligence which doctor assesses is something. Yes, you can travel. And guess what? She traveled next day. She had a surgery next week. She was fine. वो अभी 3 दफा तो कराची से लाहौर आ चुकी हैं उसके बाद. So intelligence, हम जिसे insights कहते हैं ना, हम मार्केटिंग के लोगों को मैं एक बताना चाहता हूँ. एक हम हर बंदा बोलता है what are the insights, what are the insights. There's a difference between the information and the insight. The information किसने दी? ट्रेवल एजेंट है, बाय रीडिंग द लैब रिपोर्ट्स. और इनसाइट्स किससे दी? डॉक्टर दी. इनसाइट्स क्या होती हैं? द एक्शन, द इंफॉर्मेशन, द डीप इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू एक्शंस. सो एक्शन क्या था? शी कुड हैव ट्रैवल्ड टू कराची एंड हैव अ सर्जरी ओवर देयर, आगा खान से जहां से उन्होंने करानी थी. And the information was, oh, infection बड़ी हाई है, नहीं जाना. ठीक है, तो ये सर, अब फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी 50 डिग्री की पर 48 डिग्री पर सनस्ट्रोक हो जाता है, बाहर नहीं जाना, डोंट गो देयर. और आप कहते हैं यार गीला तौलिया सर पे रखा और लोग लेबर काम कर रही हैं. सो एक्सपीरियंस क्या कहता है?
आप 50 डिग्री में काम कर सकते हैं, लेकिन जो केसेस उसने रिकॉर्ड कर ली हैं कि जी 50 डिग्री पे 100 लोग मर गए थे इन 20 years time, then you collect that and say information is saying don't do this. So that is the difference between. So अब आपने क्या करना है, वो लाला के मरने से पहले या मुंशी के मरने से पहले या जो भी, उससे पहले पहले उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, डेटा इंटेलिजेंट बनाए, ट्रेन दी एआई, एंड देन उस एआई को ट्रेन करके और उसको एजेंटिक एआई के साथ करें, तो द एजेंट विल स्टार्ट टेलिंग यू कि अब क्या, जब उसको ट्रेन करेंगे तो इट विल आल्सो गिव यू अ फोरसाइट, it will give you future trends, it will also tell you what to do, what not to do, and then you take a call on that. It's as simple as that. Ladies and gentlemen, we are running behind our scheduled time and only 2 minutes left. So the maximum we can take, maximum one question. So हम लोग की तकरीबन में जो इंडस्ट्री अगर हम लेना तो ट्रेडिशनल बेसिस पर नेशनल लेवल पे जाओ, स्किल हम लोग रन कर रहे हैं या तो सारा कुछ हम के अंदर वगैरह बेसिस है, वो पार्टी है, जो है, तो जब इस तरह की हम चीज़ों में होते हैं तो इस तरह कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो एआई यूटिलाइजेशन उस एरिया में कर सकते हैं। मैं ये विचारों पे हमें कुछ थोड़ा सा आइडिया हो कि जो लोग पूरा घर को डील कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं, क्या किस तरह वो उसको करवा सकते हैं जबकि उनको अपना डाटा मोटिवेटेड है, जैसे कि आप सबसे की बात कर रहे थे, गवर्नमेंट पूरी चाहते हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन है तो वो जनरेट होकर चला जाए, पूरी चला जाए, तो क्या क्या आप समझते हैं कि क्या हमें ये चीज़ें को कोई भी हम लोग मेंटेन करते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में इनपुट भी आ जाए कि जनरेटेड है इस तरह, मैं जनरेटेड की बात कर रहा हूँ, किस तरह से जनरेटिव नेक्स्ट लेवल उसका एजेंटिक ही होगा। देखिए, दिस इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन एंड आई जस्ट रिमाइंड्स मी ऑफ द फैक्ट कि मैंने आपको बताया कि इन 2023 में मैं आई वाज एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल अटेंडिंग अ कोर्स कॉल्ड कंपीटिंग इन द एज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, और हमें पढ़ा कौन रहे हैं, डेविड याफी और माइकल कसोमानो और इजाबेला, तीनों ने बुक भी लिखी हुई है। डेविड याफी इज ऑन इंटेल बोर्ड फॉर 27 years. लास्ट वीक वो बैठा हुआ था लिंक्डइन के ऑफिस में, एंड द केस विच दे टॉट अस वाज द वन विच दे वर गोइंग टू टीच टू द हार्वर्ड MBA. It was as current as this, the information. Now they actually, in the case study method, they actually shared a case with us about Walmart buying an online company, merging it into Walmart, and trying to give it a try कि हम एक ऑनलाइन कंपनी भी बन जाए साथ में। And you know what? It falls apart. पहले बाय की उस कंपनी के जो ओनर को CEO बनाया और को CEO दो आपस में लड़ते रहे, वो आपस में सिंक इन नहीं कर पा रहे थे, राइट? इसका मतलब है, the point which I'm trying to put across is कि Walmart का DNA कुछ और है, it's a bulk warehousing, buying, hypermarket है, and जो ऑनलाइन कंपनी उसका DNA कुछ और है, they mostly burn cash and sell at loss, ताकि वो वेंचर कैपिटलिस्ट उससे खरीद ले, जो कि उनके ओनर ने करवा लिया, वॉलमार्ट को बेच के बिलियंस बना लिए, साइड पे हो गया, और इवेंचुअली ही लेफ्ट द कंपनी वेरी कन्वीनियंटली, बिकॉज ऑनलाइन बिजनेस तो मुझे आज तक समझ नहीं आती। आज मुझे किसी का फोन आया कि S25 अल्ट्रा 375 का बिक रहा है, हमारी प्राइस आउटगोइंग प्राइस इज 4 लाख रुपया, सब कुछ भी काट देना, फ्यूचर प्रमोशंस भी काट दें, तो वो भी 390 से नीचे नहीं बिक सकता, 370 का बिक रहा है, 4.5 लाख रुपए का फोन। I can't understand how they're burning cash, right? This is what they're doing. So which means कि DNA different है। अब आप DNA के कॉन्सेप्ट को समझिए। So अब आपका DNA, आप टेक्सटाइल कंपनी से, right? You cannot be a development company. You can never be one. आप मर्जर्स उठा के देख लें, वो कंपनियां दोनों को एक दूसरे कराते हैं, वो नहीं चल पाती साहब।
शाज़ो नाज़िर ही ऐसा होता है कि दो कंपनीज इनका डीएनए डिफरेंट होता है, वो काम जब कर पाती हैं। सो इसका मतलब ये है कि यू नीड टू हायर दी एक्सपर्ट्स। देखिए, आपने आईटी इन हाउस होगा आपका, ठीक है, लेकिन आपकी गाड़ियों की वर्कशॉप तो इन हाउस नहीं होगी ना, आप टोयोटा ही बेचते होंगे। आपको नहीं भाड़ में दे, सॉरी, अगर छोटे छोटे टोयोटा नो असी अपनी वर्कशॉप असी आप करना है, बट टोयोटा इज कॉन्स्टेंटली अपग्रेडिंग देयर ओन पीपल। It's a different DNA. So you need an expert for that. For paint job, you need an expert. For construction, you need SR. And why not bringing that in? So ये question आपको मेरे से नहीं पूछना चाहिए, आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि मैं कौन सी कंपनी लेके आऊं जो कि मुझे कंसल्टिंग देकर actually AI की implementation करे. And that's where you need to spend money. अभी पैसे लगाएंगे तो कल को बचाएंगे, अदरवाइज वी विल कंटिन्यू टू सर्वाइव। बट हमारा तो मकसद ऊपर जाना है, उसके लिए तो हमें एफिशिएंसी, ऑप्टिमाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन लेके आनी है। वो यही आपने देखें, यही तो आपने, अब आप एआई से पूछेंगे कि आई एम गोना हायर दिस कंपनी, व्हाट इज गोइंग टू बी आवर कॉन्ट्रैक्ट and what is going to be the domain and how the information is not, आप कह जी आपकी टीम बैठेगी, in-house development होगी, this data cannot go out, nobody has the right, which means that you're gonna have the chief information officer आपने hire किया होगा, that would be the expert and that person is not gonna let, आपका अपने consultant अंदर in-house होगा, that person is gonna get things done। जैसे marketing manager होता है, काम एजेंसी से कराता है, आपके अपने लोग बाहर से काम, कंस्ट्रक्शन मैनेजर होता है, कंस्ट्रक्शन बाहर की कंपनी से करता है। इसी तरह आपका CIO होना चाहिए जो कि कंपनी से काम करवा रहा है। ओनली देन यू विल बी एबल, एंड आई थिंक यू शुड मूव ऑन विद द डेवलपमेंट, यू शुड डू दैट, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको अपनी कॉस्ट, और ये मैं देख रहा हूँ 25 से 40% के करीब कॉस्ट दी जाती है। देयर इज सो मच बैड कॉस्ट इन्वॉल्व। आप अप्रैल में यहाँ कटाई होती है, मैंने डेयरी फार्मिंग में बड़ा काम किया है, अप्रैल में जाके कटाई देखें और उसके बाद आप जमीन पे देखें कितना दाना जाया पड़ा होता है। मुझे ऐसे लगता है कि 10 से 15% क्रॉप हमारी फ्लोर पे पड़ी होती है एंड नोबडी इज विलिंग टू पिक इट अप। वो बस कहते हैं इसको खत्म करो, आगे निकलो। ये आपने जो जिनका देहात से ताल्लुक, आप देख लीजिएगा यहाँ पे क्या हो रहा होता है। हम फसल को जाया करते हैं और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। आई हैव सीन इट हैपनिंग। आई यूज्ड टू वर्क फॉर टेट्रा पैक जब डेयरी डेवलपमेंट में काम कर रहा था। So I hope I've been able to give a little bit of an idea. Hi. Are we? So, Umer Ghumman Saab, sir, Yes, we can. brilliantly held. So this is the 62nd meetup of Productivity People Faisalabad, and this is one of the very